So yesterday we had started with while loop. So yesterday we had started with while loop, and I'll give a review of it quickly. So there we had to initialize the variable before while, then we have to write while, and inside while in the round brackets will be the test expression, and within the curly braces after while we have to put the body of the loop. Yes, and this is the flow chart that we had discussed. And after that we had discussed few programs, but this was left. Yes, so write a program to print the reverse of a number. So for printing the reverse of a number, let us suppose I have 1 2 3. So so I had so this is the example. So if I have 1 2 3, right? So by taking this number modulus with 10, we will get what? The remainder. Okay, तो मैंने अगर 10 का इधर modulus लिया, then I will get number 3. So what we have to do from the number 1 2 3 or whatever number that you get, we have to extract the digits. Fine. Extraction कैसे होगी? First I will get the, with the help of this modulus operator, I will get the remainder. ठीक है, तो यहाँ से 3 आ गया हमारे पास में. तो जो भी इसका कोशेंट रहेगा, कोशेंट हमारे पास में क्या रहेगा? That will be 1 2. वो कैसे आएगा? That will be coming when I divide this 1 2 3 by 10. Yes, तो इसका मतलब 1 2 जो कोशेंट है, अब यहाँ पर ये that is signified by n by 10 or 1 2 3 by 10. So this will give you 1 2. And how will you extract digit 2 from 1 2? Again you take modulus of that number by 10. Yes, तो ऐसे आपके पास में exactly क्या आ जाएगा? Second number 2. Fine. And finally what you do, आप दोबारा जब इसी number का directly आप 100, you divide this number by 100, then you get one digit, first digit. Yes, ठीक है. तो इससे अब हमारे पास में क्या होता है? Now you can आप directly इसको देखो, डायरेक्टली आप मॉड्यूलस ऑपरेटर या डिवीजन ऑपरेटर यूज करके आप इसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं डिजिट्स. So you can see that there is a repetition. See this, there is a modulus is being repeated, division is also being repeated. So in this case also we can apply loops. So to print the reverse of a number, so now if I get this number, जैसे 1 2 3 में से मैंने 1, मेरे पास में 3 आ गया, 2 आ गया, 1 आ गया, so cannot I create a number 321? तो 3 को मल्टीप्लाई मैं करूंगी 100 से, प्लस करूंगी 2 into multiply by 10 plus 1. Yes, that will be the reverse of this number of this 1 2 3. That will be 321, 321. उसका हम कोड कैसे लिख सकते हैं? तो this is the code. 1 minute, I'll go through this one. See, I think this is visible, it has good visibility. So I take input from the user with the help of scanf. So that it is an integer, the number that is input by the user, and you have to find the reverse of this number. मेरे पास ये while loop जा रहा है, while n not equal to 0. ठीक है, आपका जो नंबर है, जैसे ये था आपके पास में, आप उसको डिवाइड करते जा रहे हैं या उसका मॉड्यूलस ले रहे हैं, डिवाइड करते जा रहे हैं, तो वो 0 नहीं आना चाहिए. ठीक है, बिकॉज व्हेन इट कम्स 0, तो उसके बाद में आपका तो ये नंबर खत्म हो जाएगा. सो वी हैव टू गो अप टू n not equal to 0, तब तक ये लूप चलता रहे. What we have here, I am taking a remainder variable that is giving n modulus 10. ठीक है, तो जैसे हमने इस एग्जांपल में पीछे किया कि मॉड्यूलस से हमें रिमाइंडर मिलता है, मैंने उस रिमाइंडर के लिए एक नया वेरिएबल रिमाइंडर, इंट रिमाइंडर ले लिया. ठीक है, then what will have, then I will also have to take n divided by n is equal to n divided by 10. Fine. So that also I'll take to take the quotient. तो आपको इसमें दो चीजें चाहिए, एक तो आपके पास में रिमाइंडर जो आपका यहाँ से आएगा, क्वोशिएंट जो आपका यहाँ से आएगा, और फाइनली आपको वो जो नंबर है, यू हैव टू फाइंड रिवर्स ऑफ दैट नंबर. तो वो कैसे आएगा? where you have to multiply the digit, each digit by 10, and then finally you have to add the remainder in that. Fine.
ठीक है। उसके बाद में आप क्या करेंगे, रिवर्स फाइनली में आप डाल देंगे। जैसे हमने सम इज इक्वल टू सम प्लस एन किया था, yes? तो फैक्टोरियल उसमें मल्टीप्लाई किया था। इसमें हम क्या कर रहे हैं, each step you are multiplying the digit by 10. first it will be no आप tens की फॉर्म में आएगा, then hundreds की फॉर्म में आएगा नेक्स्ट लूप में। Yes, so finally the answer will be in the form of the that will be stored in the reverse variable. And while coming out of the loop, and print the value of this reverse. Fine. So that's how you can find the reverse of the number. So now this example is with the for loop. आपने जो भी ये example करी है while loop में, so here you are transforming, you are just writing this example, the reverse of a number, this program to the for loop. Yes. So what you are doing here, again you are taking input from the user. In the initialization part, you are taking remainder is equal to 0. ठीक है। अब हमने यहाँ पर भी पिछले example while loop में भी remainder is equal remainder या reverse will be equal to 0. So both of them are 0. Yes. So you have to initialize this number as 0. Then you have to give the condition n greater than 0. Yes. And not equal to 0 is also you can write. Fine. Then in the updation part, yeah, now you have two. Thank you so much. Now you have two things. N is equal to n by 10. Yes, this is the updation part. And you are also taking this remainder is equal to n modulus 10. At each step, you are now taking the remainder. And finally, you are reversing, you are predicting the reverse of the number. You are calculating, yes. So at each step, you are now multiplying that by the reverse by 10 and you're adding the remainder. And by coming out of the loop, now this reverse variable will have the final value, the reverse number, the reversed number. So you can print by coming out of the loop the value of reverse. Right? So आपको ऐसे ही you need to learn how to transform one loop into another. Fine. Okay. So this example we had already done. While loop का हमने किया था, इसको for loop में भी factorial में डाला था. Yes. Okay. So third loop, the final loop is do while loop. तो इसमें हम क्या करते हैं? Now, I hope there is no doubt. Okay. So what I have. So मेरे पास में for loop में मैंने आपको बताया था, I have initialization here, yes, then semicolon, and there will be a condition, and I have update statement, yes, and after that we have body of the loop, okay, body of loop, and after that we had learned while loop. So while में मेरे पास में क्या था? Inside while, in round bracket, I will be putting one condition, and after this bracket, I will be typing body of loop. ठीक है? और initialization कहाँ हो गई? ऊपर हो गई, और साथ में इस body of loop के अंदर ही हम update statement कर देते हैं. ठीक है? तीसरा loop जो है, that is the do while loop. So what we have to do for that? For the do while, आपके पास में we have to write do. उसके बाद एक कर्ली ब्रेसेस लगेंगे आपकी, यहाँ पर आपके पास में आएगी बॉडी ऑफ लूप, ठीक है, और साथ में जब ये ब्रैकेट आपकी बंद होगी कर्ली ब्रेस, देन यू हैव टू राइट हियर व्हाइल, और व्हाइल के साथ में हमेशा क्या होता है, देयर इज अ राउंड ब्रैकेट एंड इनसाइड द राउंड ब्रैकेट इज द कंडीशन. फाइन. सो हियर यू विल बी राइटिंग द कंडीशन. इज इट ओके? एंड सी now after in the while loop, we are not putting a semicolon after the while, but in this do while, after the while is over, there you have to put a semicolon. Yes. So this is the important part that you have to take care of, that in the do while loop, what we have to do after writing do, we have in the curly brace we have to write body of the loop. Here updation statement will be there. ठीक है, अपने आप से इसमें देख लेना, updation statement होगा और ऊपर ही इसमें initialization जैसे while में होता है.
यहाँ जब हमने ब्रेस को बंद किया है, कर्ली ब्रेस को, व्हाट वी आई हैव टू राइट व्हाइल, फिर मेरे पास में यहाँ पर कंडीशन। ये सब कुछ खत्म हो चुका है, यहाँ पर एंड में मेरे को यहाँ सेमीकोलन लगाना है, ठीक है। ये काम कैसे करेगा? पहले इनिशियलाइजेशन होगी, देन फर्स्ट द बॉडी ऑफ लूप विल बी फॉलोड, ठीक है। थोड़ा इसमें थोड़ा सा वाइल लूप से और फॉर लूप से कैसे डिफरेंट है कि वाइल लूप से कैसे डिफरेंट है कि यहाँ इनिशियलाइजेशन तो पहले हो जाती है, जो कंडीशन है जो हम फॉर लूप में और वाइल लूप में पहले सेकंड नंबर पे इसको चेक करते हैं, ये कंडीशन एट द एंड चेक होती है, ठीक है। इसके कारण हमारे पास में आई विल जस्ट गो थ्रू द स्लाइड्स फर्स्ट, देन वी विल कम टू दिस अगेन। So the do while loop is similar to the while loop. The one important difference. What is the difference? Body of do while loop is executed once before checking the test expression, and the do while loop is executed at least once. ठीक है, मेरे पास में देखो, मैं इस for को हटा देती हूँ, मेरा इसका कोई काम नहीं है. So I have these two loops. Upper one is the while loop, lower one is the do while loop. Yes. So what I have, मेरे पास में यहाँ कुछ इनिशियलाइजेशन हुई, इस कंडीशन को पहले चेक किया जाएगा, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो बॉडी ऑफ द लूप विल बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है। और फिर कुछ अपडेट होता है और ये लूप चलेगा, जब फॉल्स हो जाएगा तो ये नहीं चलेगा, ठीक है। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है ये लूप बिल्कुल भी नहीं चलेगा। यस, नाउ कम टू डू व्हाइल लूप। सो व्हाट हैपेंस हियर, इन द डू व्हाइल लूप पहले इनिशियलाइजेशन कोई ऊपर हो रही है, ओके, देन व्हाट वी हैव टू डू, inside this do we have body of the loop, ठीक है। और फिर क्या हो रहा है, लास्ट में आपकी कंडीशन चेक हो रही है। अब लास्ट में कंडीशन चेक हो रही है तो इसका मतलब क्या, बॉडी ऑफ द लूप तो पहले फॉलो हो रही है, सो बॉडी ऑफ लूप विल बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट। अगर नेक्स्ट स्टेप में फाइनली मैं कंडीशन को चेक कर रही हूँ, तो अगर वो कंडीशन ट्रू है तब तो चलो ठीक है, लेकिन अगर ये कंडीशन पहले ही फॉल्स भी आ जाए तो भी आपकी डू की बॉडी चलेगी ही चलेगी, ठीक है। ये ब्रैकेट में जो भी इसमें पार्ट है दैट विल वर्क even if the condition is false. Fine. I hope you have got the answer now. What is the difference between while and do while? While में अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है तो आपकी बॉडी ऑफ द लूप नहीं चलेगी, लेकिन अगर do while में आपकी कंडीशन फॉल्स भी है तो भी आपकी ये बॉडी ऑफ द लूप एटलीस्ट वंस तो चलेगी ही चलेगी, क्योंकि आपकी कंडीशन जो है वो तो लास्ट में चेक हो रही है। yes? उससे पहले तो आपकी बॉडी ऑफ द लूप आ रही है, तो उसमें तो आप इसको अगर इसमें कुछ प्रिंट एफ वगैरह रखते हैं तो दैट कैन गेट प्रिंटेड, इट विल गेट एग्जीक्यूटेड। फाइन, ओके, so let's go through the syntax of do while. So I have this do and this is the body of the loop, and then while, and after this while आपके पास में राउंड ब्रैकेट है, टेस्ट एक्सप्रेशन, एंड देन क्या है, सेमीकोलन। यस, जैसे आपको बताया, इसमें हमारे पास में क्या होता है, here you can see in the flow chart body of the loop is there, yes, body of the loop, और फिर ऊपर आपका इधर इनिशियलाइजेशन हो जाता है, देन क्या है आपके पास में टेस्ट एक्सप्रेशन, सो दिस इज द टेस्ट एक्सप्रेशन। अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू होता है तो ये दोबारा बॉडी ऑफ द लूप में जाएगा। yes, अगर फॉल्स हो जाता है तो क्या है, इन द स्टेटमेंट जस्ट बिलो, मतलब ये लूप से बाहर आ जाएगा, ठीक है। अगर आप देखो while में क्या होता था, पहले टेस्ट एक्सप्रेशन होता था, सो आई जस्ट गो थ्रू द while वाला फ्लो चार्ट आल्सो वंस अगेन। तो उसमें मेरे पास में क्या है, देखो, first test expression is there and then body of the loop is followed, मतलब हर बार ये टेस्ट एक्सप्रेशन ट्रू ही होना चाहिए, only then body of the while loop will be followed। लेकिन जब हम do while की बात करते हैं तो do while की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास में बॉडी ऑफ द लूप पहले है और बाद में टेस्ट एक्सप्रेशन आता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि बॉडी ऑफ द लूप विल बी एग्जीक्यूटेड इवन इफ द टेस्ट एक्सप्रेशन इज फॉल्स, क्योंकि ये बाद में चेक हो रहा है। फाइन, सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन डू while and while। फाइन, ओके, सो वी हैव दिस एग्जांपल, एक हमारे पास में एग्जांपल है int main।
So int I is equal to 0. Do, and then do के body में क्या है, printf %i, you are printing the value of I, and then I is equal to I plus 1 while I greater than 10. ठीक है, तो ये आपके पास में क्या है, नाउ आपको पता है कि ये जो I इज इक्वल टू 0 है और ये कंडीशन आपकी क्या है, I शुड बी ग्रेटर देन 10. दिस कंडीशन इज फॉल्स. अगर नॉर्मल वाइल लूप होता तो ये चलता ना, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, हमारे पास में ऊपर printf है I, so it will definitely work. Why? Because in do while loop, at least even if the condition is false, once the body of the loop, at least once the body of the loop gets executed, fine, so this number will get printed, the value of I will get printed surely, fine. ठीक है, इसको आप चला के देखिएगा. Yes. Okay. So here we have another example. See, I have given here more examples so that you can go through implementation of it also. So I have another example. Program to add numbers until user enters 0. आपको जो भी कोई नंबर ऐड कर रहा है, rather than looking at the program, you just see this, add numbers until user enters 0. तो आप यूजर एज ए यूजर क्या कर रहे हैं, नंबर इनपुट कर रहे हैं. जब आपने 0 इनपुट किया तब आपका इनपुट भी बंद हो जाए, आपके पास में रिजल्ट क्या आ जाए, वो भी आपने नंबर्स ऐड किए हैं, इनपुट किए हैं, उनका एडिशन आ जाए. सो व्हाट विल हैपन, इसका मतलब आप 1 बाय 1 क्या कर रहे हैं, यूजर से इनपुट ले रहे हैं, है ना, उतनी बार आपको स्कैनएफ लेना पड़ेगा. तो आप क्यों ना हम क्या करते हैं कि स्कैनएफ को भी हम लूप में ले लेते हैं, बिकॉज वी हैव टू रिपीट दिस process again and again. Yes, so what you have to do now, whatever number is input by the user, तो आप क्या कर रहे हैं, you have to take the number और फिर आप उसमें last value में add कर रहे हैं. Okay, so I am taking this variable sum, that sum is equal to 0, so I am adding that sum in this number. जैसे हमने कल किया था ना, sum is equal to sum plus I, तो हमने कल किया था फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, लेकिन वो तो नेचुरल नंबर्स थे तो वो डायरेक्टली +1 हो रहा था, बट हेयर यू हैव टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर. यस, तो आप इनपुट जैसे ले रहे हैं, सो यू डायरेक्टली कीप ऑन एडिंग दैट नंबर इन दिस सम, and in the while there you have to put the condition, there you can write number not equal to 0. Yes, and in the printf finally you can print the value of sum, तो final आपकी sum की value आएगी, आप इसमें print कर सकते हैं, that will be the addition of those numbers input by, those are input by the user. Yes, so why we have written here 0.2, what is the meaning of, see, LF is for double and 0.2 is for going up to 2 decimal places. ठीक है, इसको आपको रन करके देखना है अपने आप से. Okay, so what is the difference between while and do while? This is most important, that we have discussed also. In do while loop, the condition is tested at the end of the loop, and it means that the body of loop gets executed at least one time, even if the condition is false. Okay, yes. ओके, सो अभी तक आपको अगर कोई डाउट है इन डू वाइल और वाइल और इन फॉर, जस्ट आस्क मी, यू कैन आस्क मी, यू कैन रेज योर हैंड, यू कैन आस्क. अभी तक कोई डाउट है, देन वी कैन गो फॉरवर्ड. बताइए, यू कैन रेज योर हैंड, आई विल आंसर यू. बताइए, ये क्वेश्चन. सोनाली. Ma'am, could you please explain how we use the when we had to reverse the digits? So how did we extract the middle number when we divided it twice by 10? Can you please explain again when we reverse the number, the program that you showed us to reverse the number? So how did we extract the second digit from the number? You divided it twice by 10. Yourself now, okay. Okay, so this was the example that I had taken. तो अगर मेरे पास में 1 2 3 is the number, so if I now see
what will happen if I divide, I take modulus of 1 to 3 by 10. Okay, so this is my first step. What will I get? I will get 3. Yes, इसका 10 से मॉड्यूलस मैं लेती हूँ तो I will get 3. दूसरा, अगर मैं क्या करती हूँ, अगर मैं इसी 1 2 3 को डिवाइड करती हूँ by 10 तो मेरे पास में क्या आएगा? I will get 1 2. Yes, okay. Now what I do, इस 1 2 को अगर मैं किसी और नंबर में ऐसे डाल के फर्दर मैं इस 1 2 का मॉड्यूलस कर देती हूँ by 10, so I will get the second digit. That's it. आपने 1 2 3 का मॉड्यूलस by 10 किया तो लास्ट डिजिट आ गया ना आपके पास में, कोशेंट जब आप निकालेंगे so that will give 1 2. Yes, इसी 1 2 को आप लेके इसका मॉड्यूलस by 10 कर दीजिए, then again you will get the last digit, that is 2. Further you can, you can put again this number, whatever 1 is there, there is a 5 digit number, you can again put that number in some other variable and then you can again repeat the modulus. Fine. ठीक है. Any other question regarding the loops for while and do while? Okay, then we have to move forward now. Yes. Okay, so after for while and do while we have infinite loop also. Infinite loop, okay, any any loop works till the condition is any loop, anything that gets repeated until the condition is true. Yes, if the condition is false, that repetition will not work or that loop will not work. Yes, so there is a case where the condition is always true. That case will, at that point the loop will enter the infinite loop. Your particular loop will enter the infinite loop. Infinitely वो चलती रहेगी अगर it is always true. कैसे है? Like this example, what we have in this example, I have just wait. So int I is equal to 0. So here in this case I have for I equal to 0 सेमीकोलन और दूसरे सेमीकोलन में यहाँ क्या है? खाली छोड़ा हुआ है. Yes, एक मिनट, maybe it is not visible to you. See this, ये जो जहाँ कंडीशन होती है that portion is empty, so it means there is, this condition is always true. Fine, so this loop will work infinitely. It is called infinite loop. Fine, इसको आप चला के देखिएगा, your loop will run infinitely. The next topic is nested loop. Nested means inside one. Yes, जैसे हमने nested if किया था. So loop means, nested loop means if we have a loop inside another loop. Yes, so nested loop consists of outer loop and inner loop. So we have two loops. Yes, inside each other. These are not two independent loops. Fine. एक मिनट, ये देखिए, अगर मेरे पास में I have a loop here. Yes, तो यहाँ मैं कुछ loop लगा रही हूँ. This is a loop. Yes, so after this I have another loop. Yes, there are some other options and this is another loop. This is not nested loop. ये दो independent loops हैं. This is not nested loop. But if I have this loop inside this first loop, this is called nested loop. क्योंकि मेरे पास में ये जो मेरा लूप है, जो इंटरनल इनर लूप है, ये आउटर लूप के अंदर है. यस, सो लूप इनसाइड अनदर लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप. ऐसे while के अंदर while, ऐसे it is also called nested loop. So what we have to do now, see this. पहला मेरे पास में जो लूप है, there I can take I variable. I have taken I variable. I equals to 10, I less than equal to 100. तो आउटर लूप जो है वो कितनी बार चल रहा है? 1 से लेके 100 तक. ठीक है, हमने जब किया था ये फॉर लूप शुरू किया था तो उसमें हमने ये डिस्कस किया था ना कि ये कहाँ से कहाँ तक जाता है, यहाँ से शुरू होके यहाँ तक गया. ठीक है, इनसाइड जो लूप है मेरे पास में इनर लूप, तो दैट गोज फ्रॉम, आई एम टेकिंग j वेरिएबल फॉर दैट गोज फ्रॉम 150. यस, तो अगर मैं टोटल आपका काउंट करूं, मेरे पास में टोटल 100 into 50 iterations होंगी. कैसे? Now I have this loop for int I equals to 1, then I less than equal to 100, I plus plus, then I have j is equal to 1,
and I had j less than equal to 50 j plus plus. अच्छा अब देखो क्या होता है इसमें. So for I equals to 1, ठीक है, मेरे पास में कैसे ये लूप चलता है अब हम ये देखेंगे. फॉर i इक्वल टू 1, देखो ये कितनी बार चलेगा, i इक्वल टू 1 पे ये सारा चलेगा, जो भी हमारे पास में सेट ऑफ कंडीशंस होती हैं वो चलती हैं, ठीक है. लेकिन अब आप ये ध्यान से देखो कि यहाँ पर मेरे पास में एक और लूप आ गया है, j इज इक्वल टू 1. ये जो j इज इक्वल टू 1 है वो एक बार तो नहीं चल रहा, कितनी बार चल रहा है, वो तो 50 तक चल रहा है. इसका मतलब क्या कि जब भी मेरे पास में i इज इक्वल टू 1 आया, this loop will work up from 1 to 50. So it will work from j is equal to 1, j is equal to 2, j is equal to 3 and so on up to j is equal to 50. Last क्या है इसका 50. फाइन. ओके, तो जब ये लूप कंप्लीट हो गया देन ये आउटर लूप, अब यहाँ पर जैसे अगर कुछ मेरे पास में प्रिंट एफ है यहाँ कुछ, वो भी एक बार ये that will work for I is equal to 1 और ये लूप अब खत्म. Now we will again updation किसकी हुई अब, now I will be I will now be updated to I is equal to 2 because initially it was I is equal to 1. Yes. So now I will have I is equal to 2. Yes. So for this I is equal to 2 मेरे पास में क्या है, j is equal to 1. Yes, j is equal to 1 I have. Then यहाँ पर क्या है, j is equal to 1 will work. Why? Because 1 is less than 50. Then क्या होता है, body of the loop is followed and then j plus plus means j is equal to 2. So it will go for j is equal to 2. Again यहाँ पर अभी तो condition false नहीं हुई तो j is equal to 2 हो गया. Now it will be updated, j is equal to 3 and this 3 is less than equal to 50. So now it will go for j is equal to 3 and so on up to j is equal to 50. Yes. और जब भी j is equal to 50 हुआ तो j plus plus हुआ j is equal to 51. So this condition is false and it will come out of the loop. Yes. Now you can see how many times it will work. So first time it is working 50 times. Again it is working for 50 times. So now at the end what we have, this I will go from 1 to I is equal to 100. Yes. So how many times it will work? That is how we can see it will work for 50, 50 into 100 times. Yes. क्योंकि I is equal to 1 पे भी ये 50 times चल रहा है, I is equal to 2 पे भी 50 times चल रहा है. Yes. Total I is equal to 100th वाली पे जाके कितनी बार चला है ये, 50 into 100 times. I hope you are getting this. Yes. So that's how total 100 into 50, this हमने last range को multiply कर दिया, total iterations are there. Yes. Now you ask any question if it is there. This is in this slide also, inner loop and outer loop is there. It is just shown. Inside loop is called inner loop and outside loop is called outer loop. Yes. So this, there are some the programs regarding this nested loop that we will cover in next lecture. Now, because I have one duty also. Yes. So if you have any questions, please ask me. Now it's your time to ask. I'll give you 3 minutes. Please ask me the questions. If you have any questions, please ask me. If there is no question, it means that you are, you are understanding everything. There is no doubt at all. And I can take your test anytime. ठीक है. So now I will be going through the one example. We can do this in the following pattern. So I have this pattern. ये stars का design है. Yes. So you can count it. 1 minute. Yes. So you can count it. This, I think we can go, do it in the next lecture. If you have any questions, please ask. So that I, in the next lecture, it will take some time to explain. Okay. If any doubt is there.